Anyone? Yes. See. Yeah, definitely. And that is the cycling between the different type of like atmosphere, maybe biosphere, ठीक है, or ocean, ठीक है. There will be the relationship, but I am asking कि why it is so important? Because one of the most important application is it regulates the temperature of the earth. Am I right or wrong? It regulates the temperature of the earth because water vapor, ठीक है ना, acts as the major greenhouse gases, you know, right? Yes or no? So it like act as the protective layer for the UV radiation or like short wave radiation, ठीक है, जो solar radiation आता है, so it act as the protective layer. So water vapor is takes place for the one of the most of the important greenhouse gases in the atmosphere. So that's why it is like regulates the temperature of the earth, है ना, that's why it is so important, ठीक है. If you see, water also exists in the three phase. लिक्विड भी इंपॉर्टेंट है ना, सॉलिड भी इंपॉर्टेंट है, वेपर भी इंपॉर्टेंट है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मान लो आइस, स्नो और आइस, दिस इज द सॉलिड फॉर्म. इट एक्ट्स एज द मेजर रिजर्वर फॉर द ग्राउंड वाटर ऑल्सो. ये सो नो बताओ. सो स्नो और आइस एक्ट एज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर. सेम आज लिक्विड भी है, सेम एज द वेपर भी है. एंड नॉट ओनली दिस, एनिमल टिश्यू पे भी 60% विल बी मेजर वाटर, 90% प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ वाटर, मैं भी बताया. सो इन योर बॉडी ऑल्सो 70% मेड अप ऑफ वाटर ओनली. Without water you gradually get dehydrated. Okay, so water vapor is also most abundant and important greenhouse gas in the atmosphere. In the absence of the water vapor, Earth's average surface temperature would be significantly lower than its current value, about 300 Kelvin. ठीक है, अभी बताया ना, it acts as the protective layer. ठीक है, because solar radiation जो आता है normally short wave infrared radiation normally आता है, ठीक है. So water vapor की वजह से it acts as the protective layer, ठीक है. It lowers the amount of solar radiation put in the earth. Okay, so there will be the continuous cycling of water between land, atmosphere and ocean, sustain the flow of water. Can anyone say me कि why the cycling of water or hydrogeological cycle is so much important? कोई बता सकता है? Why it is sustainable? हम इसको sustainable क्यों बताते हैं, बताओ. हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को क्यों सेल्फ सस्टेनेबल बोलते हैं? व्हाई इट इज सस्टेनेबल? कोई बता सकता है? व्हाई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज सो मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज when there will be the cycling process that is self sustainable. हाँ बताओ. Yes. Okay, so whatever is the cycling process going on, that is the self sustainable. जैसे इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल ले लो, ठीक है. कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसीलिए ना इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है. सो दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इज द साइक्लिक प्रोसेस. कुछ आपके पास रहेगा, कुछ आप खर्च करोगे, है ना, कुछ बैंक पे डालोगे, कुछ इन्वेस्ट करोगे. Yes or no? So that is the cash flow cyclic process. So that's why the everything which is undergoing the cyclic process is really important. That is self-sustainable. ठीक है? So ability of the water to store large amount of energy. It also act as the protective layer for the solar radiation जो अभी बताया, in the form of the latent heat.
ओके, बिकॉज हाई थर्मल कैपेसिटी, ओके, मूविंग वाटर वेपर को जो ट्रांसपोर्ट होता है तो वो बचाता है, एनर्जी को रिड्यूस करता है। द अमाउंट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज कमिंग फ्रॉम द सोलर रेडिएशन, सो ये रिड्यूस करता है वाटर वेपर, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोलॉजी एंड व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोजियोलॉजी, कोई बता सकता है? हाइड्रोलॉजी क्या है, हाइड्रोजियोलॉजी क्या है? इज देयर एनी डिफरेंस और नो? बताओ, एनीवन? If you are saying the wrong answer, it's okay. You can say. बताओ, anyone? I'm audible or no? Because you are not saying nothing. No? Hydrology is a simple science of water. Yes, बताओ, चार्ट पे। Yes, someone has left. Okay. So hydrology, हाँ बताओ। Yes, you can say something, but hydrogeology is the part of the hydrology. Hydrology is the broadest form, जैसे मान लो ये है, इसका सबसेट है सिंपल हाइड्रोजियोलॉजी। ये पार्ट है हाइड्रोजियोलॉजी, ये पार्ट है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज सिंपली नथिंग बट द साइंस ऑफ वाटर और स्टडी ऑफ द वाटर। ठीक है, अगर ब्रॉड सेंस की बात करें, इट इंक्लूड्स द मूवमेंट, ठीक है, ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, एंड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। ठीक है, सो सिंपली ब्रॉडेस्ट थिंग इज द हाइड्रोलॉजी। वाटर के बारे में स्टडी करना सिंपली हाइड्रोलॉजी। ठीक है, इट्स सर्कुलेशन, बीट इट मूवमेंट, बीट इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, सो दैट इज द हाइड्रोलॉजी। बट हाइड्रोजियोलॉजी क्या है? It is the subset of hydrology, okay, that tells about the geological material. Okay, so that is called the hydrogeology, or we can say simply the groundwater geology. ठीक है, groundwater geology. Hydrogeology deals with the groundwater only, but hydrology simply आप surface water पे भी बोल सकते हो। ठीक है, हाइड्रोलॉजी सिंपली डील्स विद नॉर्मली सरफेस वाटर, ओके, एंड हाइड्रोजियोलॉजी नॉर्मली ग्राउंड वाटर। कैन एनीवन टेल मी कि ग्राउंड वाटर क्या सब सरफेस पे, सब जगह पे है या इन द पर्टिकुलर एरिया? बताओ। You cannot find the groundwater in everywhere, right? Groundwater will find normally in the saturated zone, right? Am I right or wrong? In the saturated zone, when we will study the vertical distribution of the groundwater, ठीक है? What do you mean by soil water zone? What do you mean by the water table? What do you mean by the सैचुरेटेड जोन? ठीक है, तब हमको पता चलेगा कि सैचुरेटेड जोन क्या है। सपोज ये सरफेस है अंडरग्राउंड, ठीक है, सरफेस है, अगर उसके बिलो आओगे सो देयर विल बी द सेवरल जोन, राइट? सम ऑफ द मटेरियल इज फिल्ड विद एयर, सम ऑफ द मटेरियल विल फिल्ड विद वाटर, बट व्हेन देयर विल बी द coming to the one zone, when this complete material or this complete formation
is completely filled with the water, that is called the saturated zone. In the saturated zone, we'll normally find the groundwater. Clear? Or any doubt? So normally ये diagram है. So this is the phase diagram of water. Phase diagram of the water. So in which water exists in the ice form, solid form, liquid form, and the water vapor. Okay. So this will be the point that is called the triple point of water. ठीक है. What is the exact meaning of the triple point of water? कोई बता सकता है? Exactly. So here the degree of freedom will be 0. Am I right or wrong? All the phases coexist at this particular point. Yes or no? If you took this particular part, now this line, along this line, water will stable, है ना? Water vapor will also stable. But this particular point where degree of freedom will be 0, right? So all the phases coexist at this particular point, at the particular temperature and the particular pressure. ठीक है? तो temperature ये है and pressure ये है. If you look the pressure here, sorry. So this is the pressure, right? 0.06 Pascal. So this is the about temperature. ना ये fix होता है normally. ये आप phase diagram जब igneous petrology पे पढ़े होंगे. So this is all about the different phase of the water, है ना? So the point at which the vapor, solid and liquid all exist in the equilibrium is called the triple point of water. Temperature कितना है? This is fixed because if you see the melting point of the water is fixed, same as the triple point of the water in the phase diagram is fixed. That is the 273.16 Kelvin or normally 0.01 degrees centigrade or pressure 611 Pascal. ठीक है ना? So this is all about the water and groundwater. So this is really important. ठीक है? You will get some the fact based question. Not the GSI. कोई अगर assistant geologist or assistant hydrogeologist exam देगा, there will be the lot of fact based question, है ना? Sometimes in the GSI prelims also they will ask this type of fact based question कि कितना volume आपको ocean का है, right? So this is the distribution of the water. Distribution of the water. If you see majority will be the ocean, right? 96.50% here लिखा हुआ है approximately. Ocean का 96% है, glacier 3% है, groundwater 1% है. See, the amount of groundwater is very low, and surface water. So these are the surface water, है ना? Sorry, not this part. Lake and river is the surface water, and atmosphere पे भी है water, plant पे भी है. So कोई बता सकता है what are the 3 major groundwater store? Sorry, not groundwater, water storage. जहाँ पे water storage होता है, और 3 major water reservoir क्या क्या है? बताओ. What are the 3 major water reservoir in which the water gets stored? कोई तो आइडिया होगा? No. One thing is atmosphere, right? Yes or no? One thing is land. Third is ocean. So this is the 3 major water reservoir.
सो यहीं से ना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्रिएट होता है. सपोज देयर विल बी द लैंड हियर, ये सपोज लैंड है, ये सपोज एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे सपोज ओशन है. सिंपल. ओशन से वाटर वेपर जाता है. व्हाट इज द प्रोसेस? H2O, water vapor. What is the process? बताओ कोई. Evaporation, right? From the atmosphere the water coming also. What is the process? Precipitation, right? And from the land the water go to the ocean. What is the process? Not infiltration. You can say infiltration also sometimes. This is the runoff actually, not infiltration. Surface runoff, yeah, exactly. The some of the water get runs out of the ocean, so it's called the runoff, है ना. So these are the major reservoirs of the water. So from these three major water reservoirs the water gets circulated or water get cycled. ठीक है, ये याद रखना. ये जो परसेंटेज है ना, ये याद रखना. एंड आई थिंक समथिंग ग्लेशियर और आइस कैप. इसको आइस कैप पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है. सपोज हाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द आइस कैप इन विच द वाटर प्रेजेंट. तो 3% है ना, 3% वाटर. ओशन पे मेजर 96%, ग्राउंड वाटर पे वेरी लेस 1%, लेक 0.01%, एटमॉस्फेयर और प्लांट पे 0%. ठीक है, ये याद रखना. सो दिस इज द फैक्ट. Sometimes definitely question comes, definitely you see this type of question. तो ये डाटा है सिंपली. जैसे मान लो ग्राउंड वाटर पे, ठीक है, ग्राउंड वाटर पे फ्रेश कितना है, सैलाइन कितना है, दैट इज नॉट टू मच इंपोर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट. ओशन पे कितना है, ग्लेशियर पे कितना है, ग्राउंड वाटर पे कितना है, लेक पे कितना वॉल्यूम होता है नॉर्मली. ठीक है. सो आई ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द हाइड्रोजियोलॉजी. इज द स्टडी ऑफ नॉर्मली ग्राउंड वाटर, है ना. और हाइड्रोलॉजी क्या होता है? सिंपली सरफेस वाटर. ठीक है, नॉर्मली. सो इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इट्स मूवमेंट. ओके. द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सरफेस सबसरफेस मटेरियल इज डिफाइंड बाय इट्स पोरोसिटी. ओके. इन दिस पोरोस बताया ना अभी, इन दिस पोर स्पेस इधर इट विल बी द फिल्ड विथ वाटर एंड एयर. जब वाटर दोज आर द पोर स्पेस इज फिल्ड विथ वाटर, in that particular zone we normally find the groundwater. okay. अगर pore space जब completely filled हो जाएगा water से, that is called the groundwater. in that particular zone we normally find the groundwater. तो उस zone को क्या बोलते हैं normally? saturated zone. clear? clear ना? So water present in the unsaturated portion of the surface उसको क्या बोलते हैं? soil moisture बोलते हैं, not the ground water बोलते हैं. ठीक है, ये डिफरेंस है. The water present in the unsaturated portion means those pore space will filled with air भी और water भी, है ना. So that is called the soil moisture, and those in the saturated portion of the surface is known as the groundwater. Clear? इतना clear है? Okay. So next the groundwater is considered a very important natural resources in different type of environment. ठीक है. अगर आप राजस्थान जाओगे, ठीक है, राजस्थान पे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर नहीं हो पाता है नॉर्मली, बट ग्राउंड वाटर प्रेजेंट देयर आल्सो. ठीक है. इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ग्राउंड वाटर प्रेजेंट. इन द बीट इट द एरिड एनवायरनमेंट, बीट इट सेमी एरिड, बीट इट ड्राई रीजन. ठीक है. सो सारे एनवायरनमेंट पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है. ठीक है. So this may be the only source of the water supply. Even in the humid area also there will be the groundwater. ठीक है. And why we use the groundwater for the economic and hygienic region? Because the groundwater will be the so hygiene. क्या कोई मेजर एडवांटेज बता सकता है ग्राउंड वाटर का? मेजर एडवांटेज, surface water. One thing is surface water. That means water comes from the river,
lake, ocean, है ना, these are the surface water, और other part is the ground water. कोई मेजर एडवांटेज बता सकता है ग्राउंड वाटर का? एडवांटेज क्या है, एक एटलीस्ट बता दो. देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेज, ठीक है, ग्राउंड वाटर का, बट एक बता दो. No? Anyone? If it is also wrong, then it's okay. I always say कि learning should be two ways. You can say something, I can say something, right? बताओ, जो भी आइडिया है बता सकते हो, या फिर नो आइडिया. It will be two case. Either you have know something or not knowing anything. बताओ. One major advantage will be the temperature condition of the groundwater. क्यों पता है? सरफेस वाटर का अगर देखा जाए, इफ यू इन द समर सीजन, the surface water normally usually get heated, right? In the summer, in the winter season, normally the cool, right? But the always the groundwater temperature will be some constant. उसका ambient temperature, ठीक है, आउटर टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है, एम्बिएंट टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है. नॉर्मली इफ यू इन द समर सीजन ना, आपको नॉर्मली कूल मिलेगा, ठीक है. जब आप बोरवेल हो गए घर पे, ठीक है, व्हेन यू कलेक्ट द वाटर सैंपल इन द समर, देन यू सी कि नॉर्मली द वाटर विल कम इन द कूल समर सीजन पे. अगर विंटर पे तो हॉट मिलेगा. यस और नो? यस और नो? So that is the one major advantage of the groundwater. ठीक है, temperature condition of the groundwater doesn't depend on the ambient temperature of the environment. ठीक है, let's go. Already discussed कि according to Todd 90th. So according to the Todd 80 paper, so definition of the groundwater will be like this. So groundwater hydrology may be defined as the science of the occurrence, distribution and movement of water below the surface of the water. ये जो below the surface लिखा हुआ है ना, so from this trick will come. Not all the below surface will not get any kind of the groundwater. अभी बताया, in the saturated zone you only get the groundwater, है ना. So why you study groundwater? I already discussed. Importance of the groundwater in India. Normally 85% of the domestic use, more than 55% will be the agricultural use, 50% will be the urban and industrial use. Okay? So this is the application of groundwater in different industry. Majority will be the domestic use. And these are some of the data collected from the Romani, ex-chairman of CGWB paper, 2006 paper. So क्या कोई बता सकते हैं BCM का मतलब क्या है? Yes, billion cubic meter actually. Okay, so these are the some of the data. 433 billion cubic meter annually replaceable groundwater source, majority will be इतना है. तो वहां से 231 बिलियन क्यूबिक मीटर यूज करते हैं एंड 213 बिलियन क्यूबिक मीटर 92% इज फॉर द इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं. ओवरऑल स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इज 58%. सो कंप्लीटली ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ना अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम हायर कर रहे हैं रिसेंटली. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी कमिंग इन द नियर फ्यूचर फॉर द हाइड्रोजियोलॉजी टिपिकली, because the groundwater development is not self sufficient. अभी तक complete development नहीं हुआ है, more development, ठीक है. So there are greater than 2.5 million hectare area which is waterlogged area. Okay, so these are the basic data of India actually, not required for the competitive examination point. Okay, so अभी बताया 30% of the all fresh water, 90% liquid fresh water, ठीक है. Please remember or memorize all the data. ओशन पे कितना वॉल्यूम,
है, देन फ्रेश वाटर पे कितना है, आइस कैप पे कितना है, you can definitely get 1 or 2 question from here. Whether it is not required the groundwater, what do you mean by groundwater? So suitable composition है, free from the turbidity, ठीक है. So इसीलिए ग्राउंड वाटर का एडवांटेज है कॉलर, ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर नॉट फॉर फ्रॉम ट्रीटमेंट. हम ग्राउंड वाटर को ना ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. सरफेस वाटर नॉर्मली कॉन्टामिनेटेड होता है. सो दिस इज द वन ऑल्सो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर को हम ज्यादा ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं, ठीक है. एंड सरफेस वाटर अगर देखा जाए ना, जो घर पे पानी आ रहा है नॉर्मली, यू हैव टू पुट ए पाइप फॉर दैट. लेकिन ग्राउंड वाटर के लिए क्या, छोटा जगह पे भी बन जाएगा. होल खोल दो, बोरवेल खोल दो, वेल, ठीक है, यू कैन गेट द ग्राउंड वाटर, ठीक है. इट डजंट टेक टू मच एरिया, बट सरफेस वाटर के लिए आपको ज्यादा एरिया कवर करना चाहिए. पाइप लगेगा वहां पे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ओके, so that is one of the advantage also groundwater, ठीक है. And also relatively more safer from hazard of the chemical, radiogenic and biological pollution also. And surface water क्योंकि expose होता है ना, so there will be the chance of the radiogenic activity, or like there will be more pollution in the surface water. There will be the some biology, bacteria will be present in the surface water, but the groundwater is free from that. Okay, and supplies are not quickly affected by drought and other climate change, hence are more dependable. And also it is not affected through the drought also. So इसीलिए हम ग्राउंड वाटर को लिए यूज करते हैं नॉर्मली. ओके, सो these are the some of the advantage of the groundwater reservoir. You get it when you want it, ठीक है. जब चाहे तुम ले सकते हो ग्राउंड वाटर के लिए. लेकिन सरफेस वाटर का सीन ऐसा नहीं है, ठीक है. समर पे सूख जाएगा, विंटर पे मिलेगा, ठीक है. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द ग्राउंड वाटर. यू गेट इट व्हेन यू वांट इट. सो इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनुअल रेनफॉल ऑल्सो. रिचार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है. सरफेस वाटर के लिए क्या सीन है कि रिचार्ज होगा, बारिश होगा तब जाके मिलेगा. समर पे सूख जाएगा, विंटर पे मिलेगा नॉर्मली. सो लेकिन ग्राउंड वाटर का केस ऐसा नहीं है. एंड नॉट टू मच प्यूरिफाइड रिक्वायर्ड. प्यूरिफिकेशन का भी कोई इशू नहीं है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू. एक्चुअली समटाइम्स इन ग्राउंड वाटर ऑल्सो यू कैन गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेमिनेटेड. सो इसीलिए हम घर पे प्यूरिफायर यूज करते हैं, है ना. सो एग्जैक्टली नॉट करेक्ट, बट प्यूरिफाई होता है नॉर्मली. स्लाइट एंड टू नो इवेपोरेशन लॉस. इवेपोरेशन का भी कोई नहीं है. जैसे समर पे ड्यू टू द सोलर रेडिएशन there will be chance of the evaporation from the surface water, but there will be the no evaporation or there will be the no loss in the groundwater reservoir. लेकिन जो वाटर टेबल shallow level पे होता है ना, जो वाटर टेबल, suppose this is the surface, and if you get the water table in the like 2 or 5 meter, जो shallow reservoir है, shallow reservoir, there will be the chance of the evaporation, definitely. Okay, so this also sometimes not true. Slight to no evaporation loss. जो shallow level पे होता है वहां पे evaporate करता है. लेकिन जो deeper reservoir है, जो जहां पे water table will be the so higher, है ना, so deep पे मिलता है, वहां पे evaporation normally नहीं होता है. And groundwater development requires very small and land area. अभी बताया surface water का जैसा नहीं है. एक सिंपल वेल एक्सप्लोर कर दो, यू कैन गेट द ग्राउंड वाटर, ठीक है. मिनिमल डेंजर ऑफ द स्ट्रक्चरल फेल्योर. देयर विल बी द नो स्ट्रक्चरल फेल्योर ड्यू टू द सम ऑफ द हैजर्डियस वर्क लाइक अर्थक्वेक और बॉम्बिंग. यूनिफॉर्म वाटर टेम्परेचर अभी बताया, इट डजंट डिपेंड अपॉन द एम्बिएंट टेम्परेचर. जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट टेम्परेचर. नॉर्मली you can say 12 डिग्री सेंटीग्रेड to 15 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मली वाटर का टेम्परेचर रहता है, ठीक है. एंड सेफ फ्रॉम द इंडस्ट्रियल फॉलआउट, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, वार टाइम पॉल्यूशन. ओके, यू कैन गेट सच क्वेश्चन इन द GSI मेंस, नॉट द GSI प्रीलिम. GSI प्रीलिम्स के लिए यू कैन गेट कि ग्राउंड वाटर का नॉर्मली टेम्परेचर क्या रहता है, ठीक है. यू कैन गेट सच क्वेश्चन, बट दिस इज द GSI मेंस क्वेश्चन एक्चुअली. Write down the different type of advantage and disadvantage of the groundwater reservoir. Okay, clear. So and some of the disadvantage, monitoring the pollution difficult, ठीक है. अगर ग्राउंड वाटर पे कभी भी pollution होता है, you cannot detect,
the pollution. Why the pollution is happening? There will be the some definitely वहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगेगा, okay, ज़्यादा research लगेगा to monitor the pollution and very difficult to decontaminate. अगर एक बार contaminate हो जाए तो it's very difficult to decontaminate and manage those the groundwater. इसीलिए हम groundwater modeling पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल, ठीक है. सो इंडिया पे भी है ना नेशनल ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सेंटर, इसीलिए सो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग एंड ग्राउंड वाटर मॉडलिंग इसीलिए हम करते हैं. एंड माइनर फ्लोड कंट्रोल वैल्यू, ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लोड वाटर कैन बी डाइवर्टेड इफ इट इज समटाइम्स द फ्लोड. अगर ज़्यादा रिचार्ज की वजह से ज़्यादा फ्लोड हो गया देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द फ्लोड. ओके, नॉर्मली नहीं होता है लेकिन डिफिकल्ट है. दैट इज द मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेज of the groundwater reservoir. Hydropower head usually is not available. In some areas groundwater may be mineralized. In some part of the area you will get the mineralized zone. In that particular mineralized zone groundwater sometimes may be mineralized. Till now any doubt? So this is the very basic, and just I will provide you some insight about groundwater hydrology and hydrogeology. What is the advantage of the using the groundwater? Why normally you use the groundwater? हम ज़्यादा क्यों ध्यान दे रहे हैं as a geologist और hydrogeologist? Clear? इतना तक? Please be patient with the course because like आज अगर सब बोलने के लिए बोलोगे it is not possible to tell everything, right? So be patient with the course. Gradually we will move. Okay, and this is really important. This is the genetic classification of the water. आपके कोर्स पे भी है, और you can say source of the groundwater. What do you mean by the juvenile water? Can anyone बताओ? जुवेनाइल वाटर क्या है, मैग्मेटिक वाटर क्या है, मेटेरिक वाटर क्या है, मेटामॉर्फिक वाटर क्या है, कोनेट वाटर क्या है? प्लीज, दिस इज द टर्मिनोलॉजी. फ्रॉम वेयर द ग्राउंड वाटर इज कमिंग, सोर्स क्या है, मैग्मेटिक वाटर क्या है बताओ? एग्जैक्टली, इग्नेस ओरिजिन से, मतलब वाटर कम्स फ्रॉम द magma. Am I right or wrong? Normally it plays a huge role for the deposition of the ore. It plays a huge role. ठीक है. Normally magmatic water plutonic water भी है. Okay, plutonic rock क्या है, मतलब those are from the deep seated, right? Same as the plutonic water. Those water we normally find from the very deep. Second one is the volcanic water. Okay, so this is the volcanic water. This comes from the very shallow level, right? Shallow level. This is called volcanic water. Clear? Magmatic water. What do you mean by meteoric water? No. Not meteoric impact. Simple rainfall, right? Rainfall is the meteoric water. The water comes from the atmosphere. Water comes from the atmosphere or rainfall, you know, is called the meteoric water. Clear? What do you mean by connate water? Exactly, due to the sediment boreal gradually, or in the fossils some water will dry. ठीक है. So those are called the connate water, और कभी कभी हम fossil water भी बोलते हैं, है ना? So this is the connate water or fossil water. Those water trapped in the sediment is called the connate water. Clear? And what do you mean by the metamorphic water?
What do you mean by metamorphic water? No, the metamorphic water is normally the water found during the metamorphism. That is called the metamorphic water. During metamorphism, you will find the metamorphic water. Why this type of fluid or why this type of water is so much important? Because this play a huge role in the ore deposition also. सुना हो ना, जैसे आप पढ़ रहे हो अभी इमेज डिपॉजिट, ठीक है, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड कहाँ से, सपोज देयर विल बी द सम मेटामॉर्फिज्म, सपोज ग्राफाइट डिपॉजिट हो रहा है, where the water comes from normally, am I right or wrong? So this is the basic application of the water, different type of water. And what do you mean by juvenile water? Same, it is also the magmatic water, but these are the like new water also called new water, or same as the due to the magmatic activity it is formed. Not only magmatic activity, some of the cosmic activity also, due to the some cosmic activity the water is formed, is called the juvenile water, also called the new water. ठीक है, and this is the diagram. ठीक है, ये GSI मेंस के लिए important है, because in the GSI मेंस this is the classification of the water. और एक एक बार ना what is the exact meaning of the fossil water, ठीक है, fossil water को क्या बोलते हैं, कनेक्ट वाटर, मेटामॉर्फिक वाटर, मैग्मेटिक वाटर, जुवेनाइल वाटर, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, clear? And this is the relationship how the juvenile water is interlinked with the magmatic water. अभी बोला कि juvenile water is same as the magmatic water, है ना, but juvenile water is new and magmatic water is very old, so that word it is interlinked. So ocean water से कोनेट वाटर तक जाएगा, ठीक है, कोनेट वाटर से ओशन वाटर तक जाएगा, पानी सेडिमेंट से ओशन तक जाएगा और ओशन से भी सेडिमेंट तक आएगा, and those are the trap in the sediment is called the कोनेट वाटर or fossil water. Clear or any doubt? Any doubt till now? Exactly. In the sediment, no, in the sediment, the fossil will trap, right? You can get some of the impression of the fossil in sedimentary rock. Am I right or wrong? So that's why the connect water is called the fossil water. That's why. It is simply a literature, ठीक है, literature. Connect water को fossil water बोलते हैं. Connect water का exact meaning कि those the water trapped in the sediment is called the connate water. And this diagram taken from the Geological Society of America 1957 paper. Okay, so this diagram or this is the genetic relationship between the different type of water. Okay, magmatic water, metamorphic water, ocean water, and the connate water. Okay, these are the interrelationship or like genetic types of the water. Source of groundwater अभी बताया, so you can